हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जीएसबी मैथ्स। फ्रेंड्स, हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफिकल मेथड से किस तरह से साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करने हैं ये देखा है। तो उसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी नंबर 1 और 2 बोल के, जहाँ पे हमें दो इक्वेशन दिए गए हैं और उन दो इक्वेशंस को हमें फर्स्ट एक्टिविटी में ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है और सेकंड एक्टिविटी में हमें वही दो इक्वेशंस एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व करने हैं। तो इस तरह से ये एक्टिविटी दी गई है टेक्स्ट बुक में। Equations are x minus y is equal to 1 and 5x minus 3y is equal to 1. These are two equations given in the activity. तो हमें क्या करना है, हमें ये दो इक्वेशन पहले ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने हैं। तो ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें पहले क्या करना है, टेबल फॉर्म करना है। वी हैव टू फर्स्ट obtain a table for the coordinates. So x, y and xy are the variables here. So xy coordinates here also x, y and x, y. तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पहले टेबल ड्रॉ किए हैं और अब यहाँ पे हम एक एक वैल्यू पुट करके देखेंगे और ये एक्स वाई के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं। सो इफ वी पुट हेयर x इज इक्वल टू 0 वी गेट y इज इक्वल टू -1. हाउ दिस x minus y is equal to 1? We put here x is equal to 0, so minus y is equal to 1. So we get y is equal to -1 here. So we get first coordinate 0, -1 here. If we put y is equal to 0, if we put here y is equal to 0, we get x is equal to 1. So we write here 1 and the second coordinate is 1, 0. So now if we put here -1, x equal to -1. So -1 minus y is equal to 1. So minus y is equal to 1 plus 1 equal to 2. So this is y is equal to -2 we will get. If we put here x is equal to -1, we get y is equal to -2. So we write here -2 and order pair is -1, -2. Now if we put here 2, x is equal to 2, so 2 minus y is equal to 1. So minus y is equal to 1 minus 2 is -1. So minus y is equal to -1. So y is equal to what? We get y is equal to 1. So if x is equal to 2, y is equal to 1. So we get 2, 1 here. Now see this equation 5x minus 3y is equal to 1. If we put here x is equal to 2, 5 into 2 minus 3y is equal to 1. So 5 to the 10 minus 3y is equal to 1. So minus 3y is equal to 1 minus 10 will get -9. So y is equal to 3 we will get. So here we write y is equal to 3 and the coordinate is 2, 3. So if we take here 5,
if we take here 5, so 5 into 5 minus 3y is equal to 1. 5 5 is 25 minus 3y is equal to 1. Minus 3y is equal to 1 minus 25. Minus 24 we get. So y is equal to 24 by 3. Minus minus will get cancelled. So is equal to 8 we get. So y is equal to 8 if x is equal to 5. So we write here 8 and order pair 5 comma 8. If we put x is equal to minus 1 here, then we get 5x minus 3y is equal to 1. So 5 into minus 1 minus 3y is equal to 1. So this is minus 5 minus 3y is equal to 1. So minus 3y is equal to 1 plus 5 is 6. So y is equal to what? Minus 2. We get y is equal to minus 2 when x is minus 1. So we write here y is equal to minus 2. Minus 1 comma 2 is the order pair. And last one is, if we put here x is equal to minus 4, we get 5 into minus 4 minus 3y is equal to 1. 5 4 is a minus 20 minus 3y is equal to 1. So minus 3y is equal to 1 plus 20 is equal to 21. So y is equal to minus 7. 7 3 is a 21. So y is equal to 7. So we write here minus 7 when x is minus 4, y is minus 7. So order pair is minus 4 comma minus 7. So these are the order pairs we find here from these two equations as given in activity number 1. And we now draw the graph of these two equations with the help of these coordinates to find solution graphically. अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, जो भी हमने इक्वेशंस से कोऑर्डिनेट्स फाइंड किए हैं उसे हम यहाँ पर प्लॉट करने वाले हैं. सो द पॉइंट्स आर 0, 1, 1, 0, -1, -2 and 2, 1. So we plot first point 0, 0, -1 on the graph paper. So 0, -1. X is 0. Here x is 0 and y is -1. Here -1 of y axis. So we plot here. So we plot this point here 0, -1 and right here 0, -1. The next point is 1, 0. X is 1 and y is 0. So here is the point and we plot here and write here 1, 0. The next point is -1, -2. So -1 is x and -2 is y. So here is the point and we plot here. We write -1 and -2 y. So here x is -1. This is x axis and this is the -1 point and here is the -2 of y axis. So we plot here -1, -2. Now the next point is 2, 1.
So we plot here x is 2 and y is 1. So the point is here and we circle it, and 2 comma 1 we write here. So these are the 4 points we get here in a line. So we join it with the help of scale. So this is the graph of line x minus y is equal to 1. So this is the graph of line x minus y is equal to 1. Now we have to draw a graph of 5x minus 3y is equal to 1 equation. So these are the coordinates of this equation we will find here. So the first point is 2 comma 3. First point is 2, x is 2 and y is 3. So this is the y axis and this is x axis. X is 2, so 2 is here, and y is 3, so this one is the point. So we write here 2 comma 3. The next point is 5 comma 8. So we plot on the graph paper 5, x is 5 and y is 8. So this is the 5 and we get this point here, y is 8. So here is the point and we circle it, x is 5 and y is 8. The next point is x is minus 1 and y is minus 2. We plot x is minus 1 and y is minus 2. So this one is the same point here. Already we circle it. So this one is the point. And the next point is x is minus 4 and y is minus 7. X is minus 4. Here are the minus points of x. This is minus 4 and y is minus 7. And this is the minus 7 of y-axis. So we will get this point here. This is the 4 of x-axis and this is the minus 7 of y-axis, and this is minus 4 of x-axis. So this will point we get here minus 4 comma minus 7 here, and we will join these points as like this. Join first 3 here and the remaining 1. So we will join these 4 points in a line. इस तरह से हमने यहाँ पे एक ग्राफ बना लिया है और इस लाइन का इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. ये किसका ग्राफ है? 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. दिस इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1. सो these two lines are intersect at this point, and this point is called as point of intersection. और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो भी हमें एक्टिविटी में फाइंड करने के लिए कहा गया है. तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? y is minus 2. What is y is minus 2 and x is minus 1. So here is the x coordinate and here is the y coordinates. So what are the coordinates of point of intersection? Coordinates of point of intersection are minus 1 comma minus 2. These are the
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। और एक्टिविटी में हमें ये भी पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस के कोऑर्डिनेट्स क्या है, और जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट होते हैं वही हमारा सॉल्यूशन होता है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ आवर इक्वेशंस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन बाय ग्राफिकल मेथड। और इस तरह से हमने एक्टिविटी नंबर फर्स्ट देखी है। और अब हमें एक्टिविटी नंबर 2 में क्या बताया गया है कि यही जो दो इक्वेशंस दिए गए हैं उन्हें हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, जो हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में देखा है। तो इक्वेशंस आर x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, एंड 5x minus 3y is equal to 1. This is equation number 2. So these are the equations given. So we solve this by elimination method. Which method? By elimination which method? Elimination method. So observe these equations. X minus y is equal to 1 and 5x minus 3y is equal to 1. So we multiply here equation 1 by 5. So what we get? 5x minus 5y is equal to 5. So we call this equation number 3, and the equation number 2 is 5x minus 3y is equal to 1. This is equation number 2. Now we subtract equation number 2 from equation number 3. So here is the minus sign, and this plus will get minus, this minus converted into plus, and this plus will convert it into minus. So we subtract, here we write subtract 2 from 3. सो इक्वेशन 3 से हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। सो 5x माइनस 5x विल गेट कैंसल आउट, माइनस 5y से प्लस 3y सब्सट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा? माइनस 2y हेयर इज इक्वल टू 5 माइनस 1, सो वी गेट 4 हेयर. So y is equal to what we get? Minus 2 from this. Now we will put this y is equal to minus 2 in equation number 1. So x minus y is equal to 1 is the equation number 1. So x minus y is minus 2 is equal to 1. So minus minus we get x plus 2 is equal to 1. So x is equal to 1 minus 2. What we get? Minus 1. X is equal to minus 1. So x is equal to minus 1 and y is equal to minus 2. So by elimination method we will get the values of x and y as like this. x is equal to minus 1 and y is equal to minus 2. तो आपने क्या ऑब्जर्व किया? जो हमने ग्राफिकल मेथड से जो सॉल्यूशन हमने फाइंड किया था वहाँ पे भी हमें यही सॉल्यूशन मिला है, और एलिमिनेशन मेथड से भी हमें वही सॉल्यूशन मिला है। तो हम दोनों में से किसी भी एक मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। So we will stop here now. The remaining part we will see on another lesson. So thank you.